Sure. So those on YouTube, just check the audio on screen whether it is visible or not, and in the chat box you can write the audio and the video is clear. Okay. एक बार chat box में just write one thing that audio and the video is clear. Let's start with the lecture. So in the chat box, just write audio and video is clear. Then we'll start with the lecture. Okay. Sure. So this is our second lecture on YouTube. We conduct the series, so you'll get a permanent video. This is a basic subject. So everyone have this basic subject in not only diploma degree. It is a part of a lifetime, and you can revise this subject once you have the proper notes and the video records. Okay. In the chat box, just write the audio is clear or not. Yes. So we have Mukund, Ashlesha, Kirti, Mandar, Omkar, Aditya, Rachit, Sara, Omkar Award, Tanishka, Samriddhi, Saish, Gaurav, Disha, everyone. Okay, I think the audio is clear to everyone and the video is also clear. So like today we'll start with, last time हमने क्या किया था, हमने start किया था basics of BRI. Basics of voltage register and the current, ये start किया था. And उससे हम देखा था what is a voltage, it's input, what is the register is medium, what is a current, is out. ये देखा था basics and इसके units क्या होते हैं, ये देखा था. Ohm's law देखा था हमने, that V is equal to IR, but before Ohm's law उसके पहले क्या था, I is proportional to V. That is output is directly proportional to the input. And इसको अगर हमने open किया तो कैसे आता था, I is equal to V by R. By using this formula हमने ये derive किया था. उसके बाद हमने देखा था what is a resistor. And so some classification, resistor, resistivity, resistance. ये देखा था based on inductor, inductance, inductivity, capacitor, capacitance, capacitivity. उसके बाद हमने देखा था what is the series connection of the resistor and the parallel connection of resistor. So when resistors are connected in series, the total resistance is the addition of all, सबका addition करो, and then they are connected in parallel. See, this is a notation parallel. This is a shortcut notation for the parallel. So whenever the resistors are connected in parallel, तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, 1/RT is equal to 1/R1 plus 1/R2 up to infinity 1/R. ये देखा था. Today we'll continue with the series and parallel itself with थोड़ा सा different. So today we'll start with VI network of VI part of series and parallel. मतलब क्या? See, whether the circuit is series or parallel, in both the circuit, what is the voltage of each resistor? So series में there are, if the circuit is series, मतलब उसमें at least दो resistors connected in a continuous manner. There is no breakup line. For that two resistor, what is the value of voltage independent? What is the value of current independent? मुझे पता है voltage पूरे circuit का क्या है, मुझे पता है current पूरे circuit का क्या है, मुझे पता है total resistance क्या है. लेकिन हर एक resistor जो connected है, उसका resistor, उसका voltage कितना है, उसका current कितना है. Same for the parallel. So today we'll see the concept of VI for the series and parallel network of resistor. Okay, let's start with the first one. Let's see. This one is the resistor. Again one more resistor. यहाँ पे मैंने एक battery यहाँ पे लगा. So this is a battery V, or we can say cell. This we can also say EMF, or this is a resistor 1 and this is a resistor 2. ठीक, मेरे पास दो resistor R1 and R2. So from the given circuit, the current will flow. यहाँ से current flow होगा. ठीक है. तो अगर circuit diagram properly देखा, तो this part is a current, this part is a resistor, and this part is a voltage. ठीक है. Now we can use Ohm's law. V is equal to IR. And what is R? R is a total resistance. And what is a total resistance? These two are connected in series, है ना? Continuous manner में. यहाँ पे कुछ भी breakup line है क्या? Nothing. So what is the total resistance? R1 plus R2. मुझे R1 पता है, R2 पता है, total resistance पता है. तो अगर given voltage क्या होगा, तो we can find the current by Ohm's law.
लेकिन किसी ने मुझे पूछा व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ रजिस्टर 1 VR1, और इसको ऐसे भी लिखते हैं V1। तो व्हाट इज अ V1 और VR1? इट इज अ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 1। ये रजिस्टर 1 है ना, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? ये रजिस्टर 2 है ना, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? इट इज VR2 एंड V2। लाइक वी कैन से वन फैमिली है, एक फैमिली, उनके पास 1000 रुपीज है, फैमिली के पास 1000 रुपीज है ना, लेकिन फैमिली अगर 4 पर्सन है, 4 पीपल, तो हर एक के पास कितना है? किसी के पास 250, किसी के पास 500, किसी के पास 100, ऐसे होगा डिवीजन। तो पूरे सर्किट के पास दिस इज अ वोल्टेज एंड दिस इज अ करंट, लेकिन सर्किट में कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है, रजिस्टर 1 रजिस्टर 2। तो उनका कलेक्टिव वोल्टेज कितना है? V। उनका कलेक्टिव करंट कितना है? I। लेकिन दोनों का इंडिविजुअल कितना है? इंडिविजुअल वोल्टेज, इंडिविजुअल करंट, दोनों का कितना है? अभी वो स्टडी करें, ठीक है? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्किट। So VI of a series network. See, मैंने सेम डायग्राम ड्रॉ किया था अभी। So this is the resistor 1, this is the resistor 2, this is the voltage, battery, and this one is a current. तो अगर मुझे वोल्टेज ऑफ रजिस्टर 1 फाइंड आउट करना है, ठीक, तो ये थोड़ा यहाँ पे आएगा ऐसे। So मुझे अगर वोल्टेज ऑफ रजिस्टर फाइंड आउट करना है, so this is the voltage across resistor 1. We can say VR1. तो कभी-कभी उसको V1 भी लिखते हैं। So किसी ने बोला what is the voltage across the resistor 1? So it's a VR1 or the V1. If they ask you what is the voltage across the resistance 2, क्या आएगा? R2 is replaced by this VR. तो यहाँ पे आएगा VR, or we can say V2 also. Now one more point. Whenever the circuit is series, अगर सर्किट सीरीज में होगा, then the voltage across R1 and R2 are different. मतलब जो टोटल वोल्टेज है V, जो VR1 है and this VR2, all are different. All are different. एक कंडीशन है जहां पे सेम हो सकता है, लेकिन वो छोड़ दो, एक्सेप्शनल केस है। So for the series network, voltages are different. मतलब total voltage and individual voltage are different. Same नहीं आते. But if the circuit is series, in that series network, current flowing through R1 and R2 are same. मतलब जो total current I, जो current I R1 है, that is the current flowing through resistor 1, and the current flowing through resistor 2, or we can say I2 and I1, they are same. So what is the concept? That current is same, but voltage are different. कहाँ पे? In the series network. Just learn this concept. हमने last time series में क्या देखा था? कि whenever the circuit is in series, the total resistance is addition of all. सबका addition करो. One more concept is कि in the series network, voltages are different, they are not same, and current are same. ठीक है? तो मैंने यहाँ पे hence लिखा है, hence total voltage and individual voltage are all are different. तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा ना, this is indicate not equal, ये equal to नहीं है, but the current are same. IR1, IR2, they are same. मतलब जो करंट टोटल सर्किट से पास होने वाला है, सेम करंट रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 से पास होगा, ठीक है? So what is the basic concept? The voltages are different in the series network and the current are same. And voltages are different. So what is the conclusion? कि total voltage is equal to voltage of first resistor and voltage of second resistor, इसका एडिशन। तो अगर टोटल वोल्टेज 100 है, and इसको मैंने डिवाइड किया तो ऐसे हो सकता है 60 and 40, ऐसे हो सकता है। समटाइम एक्सेप्शन केस 50-50 भी हो सकता है, सम केस इट्स 30-70 भी हो सकता है। सो टोटल वोल्टेज इज एडिशन ऑफ वोल्टेज ऑफ टू रेजिस्टेंस। तो हमने क्या कंसेप्ट देखा आज? इन द सीरीज नेटवर्क वोल्टेजेस आर डिफरेंट, वोल्टेजेस आर डिफरेंट, लेकिन सर्किट क्या चाहिए? सीरीज, देन ओनली, एंड द करंट आर सेम। मतलब अगर टोटल करंट इज 5 एम्पियर, then current flowing through resistor 1 is also 5 ampere and current flowing through resistor 2 is also 5 ampere. तो इन तीनों में से एक भी वैल्यू मुझे पता है ना, तो आई कैन फाइंड द अदर्स। मुझे समझो IR2 पता है, देन आई कैन फाइंड IR1 I, because every all three are same. तो कोई एक भी वैल्यू पता होगा तो नो नीड टू टेक एनी टेंशन ऑफ द अदर वैल्यू। हाँ, यहाँ पे वी नो एटलीस्ट 2 वैल्यू, एटलीस्ट 2 वैल्यू पता होना चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइंड थर्ड वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है? So any doubt in this series, and we'll solve the sums based on this series network. So don't worry, we'll solve the sums. But still, do you have any doubt based on the series network? कुछ भी doubt है? So voltages are different,
current are same. These are the conclusion, and we can derive the formula voltage is equal, total voltage is equal to VR1 plus VR. कभी-कभी इसको V1 plus V2 भी लिखते हैं. It's a depend upon, it's a style of writing. Okay, sometimes they write VR1 VR2, sometimes they write V1 V2. Okay, just go through this PPT. So if you have any doubt, you can ask me. Okay, sure, just go through it, and कुछ doubt होगा तो you can mention in the chat box. काही doubt असेल chat box मध्ये mention करा. Else in the chat box just write VI of series network is clear. क्या लिखना है? VI of series network is clear. मतलब concept clear. Then we'll solve sums. एक sum we'll solve right now itself, and एक sum and give the homework. Okay. So in the chat box you can write VI of series network is clear. क्या लिखना है? VI of series network is clear. चलो, अब कुछ भी डाउट होगा you can ask. ठीक है, चलो फटाफट. गुड. सो रचित ने लिखा है, गौरव, सारा, कृष्णा, राहुल, others also write down. Okay, so all of you just write in the chat box. चलो, सबने लिखा है इन चैट बॉक्स? वेरी गुड. ठीक है. यस. सो चिन्मय, वेद, समृद्धि, अमय, आदित्य, विदेश, अमोल, वेदांत, मुकुंद, मंदार, प्राप्ति, नंदिनी, साइश, वैदेही, दिशा, अश्लेषा, ये सबने लिखा. वेरी गुड. ठीक. चलो, सो विल सॉल्व वन सम बेस्ड ऑन दिस वन. ठीक. Ten, 15 and 5. Okay. So we'll solve some based on this one and draw one circuit. So this is register 1, this is register 2, and this is the battery. So इसका value 10 ohm, इसका value 15 ohm, and इसका value 20 ohm. Okay. So 10 ohm, 15 ohm, 20 volt, and this is the current. So we can assume this one is R1 and this one is R2, this is a V and this is current. And what is the question? Question is find total resistance, total current, and individual voltage, current. So what is the question? Key from the given circuit, you need to find the total resistance, total current, and individual voltage and individual current. मतलब ये रेजिस्टर R1 है तो इसका वोल्टेज एंड करंट क्या है, ये R2 है तो इसका वोल्टेज एंड करंट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द गिवन. यहाँ पे गिवन क्या? सो व्हाट आर द गिवन? सो रेजिस्टर 1 is 10 ohm. ठीक है. Then रेजिस्टर 2 is 10 ohm, वो 15 ohm. ठीक है. उसके बाद करंट कितना है? That we don't know. So what is the next given? That is the voltage. Voltage is how much? 20 volt. So these are the given. R1 is 10 ohm, R2 is 15 ohm, and voltage is 20. उसके बाद let's start the to find. मुझे क्या क्या find out करना है? Total resistance, that is RT. Total current, that is I. Then VR1 find out करना है. VR2 find out करना है.
IR1 फाइंड आउट करना है एंड IR2 फाइंड आउट करना है। 6 पैरामीटर मुझे फाइंड आउट करने हैं। एंड सर्किट को कैसे, इट्स अ सीरीज ऑफ पैरेलल, इट्स अ सीरीज, सर्किट इज सीरीज ना, ठीक है। तो मुझे ये सब पैरामीटर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। जस्ट गो थ्रू द सर्किट, कुछ भी डाउट होगा इन द सर्किट, कुछ भी क्वेरी होगा इन द सर्किट, यू कैन आस्क, ओके, यूज द चैट बॉक्स एंड जस्ट गिव द आंसर। तो कुछ भी क्वेरी होगा इन द सर्किट, यू कैन टेल मी, ठीक, जस्ट गो थ्रू द सर्किट। सो जो यहाँ पे जूम दिख रहा है आपको, दैट जूम नीचे वाला, दैट इज IR1 एंड IR, ओके। तो जूम के पीछे क्या हिडन है, दैट इज IR1 एंड IR, ठीक। जस्ट गो थ्रू द सम, विल स्टार्ट द आंसर इन मिनट। चलो, तो सबने लिखा है गिवन, और वी कैन राइट डाउन आफ्टरवर्ड्स, ओके। जस्ट गो थ्रू द कांसेप्ट। ये बेसिक थी है। तो सबसे पहले मुझे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। नो द सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज़ दे आर इन कंटीन्यूअस मैनर, नो ब्रेकअप लाइन, या फिर कुछ भी ब्रेकअप लाइन है क्या, आंसर इज नो, देयर इज नो कॉल्ड ब्रेकअप लाइन। सो हाउ टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, चलो लेट्स फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। So I erase these few things, okay? You can write afterwards. किसी को simultaneously लिखना है, you can write, okay? In speed maintain रखो मेरे साथ। So let's start with the solution. So how to find total resistance? The total resistance R1 is plus R2 because they are in series. So 10 plus 15, it's how much? 25. That is the total resistance. Now मुझे voltage पता है, total resistance पता है, then I can use Ohm's law. So by using Ohm's law, what is Ohm's law? V is equal to IR. यहाँ पे R क्या, that is RT. Why I write RT? Because यहाँ पे दो resistance है, दोनों का राइट सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज RT. सो मुझे अभी क्या फाइंड आउट करना है, I. So what is I? V upon RT. चलो, so what is the voltage? Voltage is a 20. What is the resistance? That is a 25. ठीक, use a calc and just give the answer. Use the chat box and just give the answer of current. Current कितना है, okay? Just give the answer in a chat box. चलो, let's see किसका आंसर आ रहा है. So what is the value of current? So total resistance how much? 25 because they are connected in series. Series में connection है ना. So total resistance कितना आ रहा है? 25. And by using Ohm's law क्या आएगा? I is equal to V upon RT. So V कितना है? 20. R कितना है? 25. Then find the current. कितना है current? Just find out करो and use the chat box. Let's see किसका आंसर आता है. So what is the value of current? Anyone? Use a calc. No need to solve on the paper. Rachit Jadhav says 0.8. Okay. This is 0.8. Use a calc. Do not use any normal method. So division use a calc. So Rachit Jadhav says 0.8. Is it correct? Others? सबको आया? Yeah. वेदांत को भी आ गया 0.8. उसने perfect लिखा है with ampere. So it's 0.8 ampere. It's a correct. So what is the answer? Yeah. So वेदांत को भी आ गया. रचित ने दिया है, नंदिनी, स्वारा, चरस, रचित, राहुल, आयुष, गौरव, प्राप्ति, स्वारा, मंदार, कृष्णा, वेरी गुड. अश्लेषा, हर्षवर्धन, गुड. साइश, सब कौन सा राइट, ओके, वेरी गुड. सो इट्स 0.8 एम्पियर. तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस भी पता है, मुझे टोटल करंट भी पता है. देन आई विल फाइंड द इंडिविजुअल वोल्टेज एंड इंडिविजुअल करंट, कुछ दो पैरामीटर तो हो गए. ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. यहाँ तो किसी को डाउट नहीं ना? श्योर, सबको अमूल सुरेश ने भी दिया, वैदेही, प्राप्ति, अमेय. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Now circuit is connected in the series. Circuit is connected in series, and in the series network, current are same. So I is equal to IR1 is equal to IR2
और 3 आर सेम, तीनों वैल्यू सेम है बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. मैंने बताया था इन द सीरीज नेटवर्क करंट इज सेम. सो टोटल आई हमने फाइंड आउट किया है. सो वी नीड टू फाइंड IR1 IR2 ऑल आर सेम. सो कितना आएगा? दैट इज 0.8. तो सबका वैल्यू कितना है? दैट इज 0.8. तो वी नीड टू फाइंड IR1 IR2 अगेन ऑल ऑफ 3 आर सेम बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये तो क्लियर होना चाहिए. Then let's see what is the value of VR1 and VR2. See, what is Ohm's law? V is equal to IR. और ये R कौन सा है? Total resistance. Because यहाँ पे V कौन सा है? V is a total voltage, I is a total current, and R is a total resistance. Everything is a total whole circuit. मुझे क्या find out करना है? मुझे find out करना है VR1. Specific find करना है. I don't want the value of total voltage. जो पता है. मुझे क्या find out करना है? Total वोल्टेज ऑफ रजिस्टर पर. तो अगर मैंने V को रिप्लेस किया VR1 से तो मुझे I को रिप्लेस करना पड़ेगा IR1 से एंड RT को रिप्लेस करना पड़ेगा R1 से. बिकॉज आई वांट टू फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? स्पेसिफिक वैल्यू. सो V इज इक्वल टू IRT. ये तो टोटल फॉर्मूला है ओम्स लॉ का. अगर मुझे V को रिप्लेस करना है VR1 से बिकॉज मुझे फाइंड आउट करना है VR1. So if I replace V by VR1, so I कैसे replace होगा? I is replaced by IR1. RT कैसे replace होगा? That is total resistance by R1. So VR1 is equal to IR1 into R1. Again it's a Ohm's law only. Only उसका format थोड़ा change किया. So अगर total voltage find out करना है तो we'll use this formula. लेकिन individual voltage find out करना है, that time I'll use VR1 is equal to IR1 into R1. Sure? No one? No doubt? So what is the value of IR1? यहाँ पे देखो, it's a 0.8. And what is the value of R1? R1 is a 10. So 0.8 into 10 कितना आएगा? It's a कितना आएगा? Use the chat box and just give the answer. 0.8 into 10. So what is the answer? Use the chat box and just give the answer. What is the value of VR1? And use the same concept to find the VR2. Use same concept to find the VR2. मुझे chat box में क्या चाहिए? The value of VR1 and VR2. ठीक है? चलो immediately use a calci, use this logic and find out the answer. मुझे VR1 and VR2 दोनों का आंसर चाहिए. मैंने VR1 बताया, find the final answer. Then try the same logic for the VR2. तो V is equal to IRT. जैसे मैंने replace किया VR1 से, same you replace by the VR2. ठीक है? So find the VR1 and VR2. Use the calci and just the answer. Yeah. So हर्षवर्धन ने आंसर दिया 8. ठीक है? Just written. Just find out the answer and give the answer in the chat box. ठीक है? तो सबने आंसर दिया. That is 8 voltage. You should write a unit also. यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 8 volt. Think about VR2. And what is our value of VR2? VR2 Harshavardhan says it's a 12 volt. See, अगर VR1 is equal to IR1 R2 R1 है, so VR2 क्या आएगा? IR2 into R2. So what is IR2? It's again 0.8. And what is R2? It's a 15. So 15 into 0.8. आंसर कितना आएगा? Everyone is saying 12. Check your others. Is it 12? Check करो. 0.8 into 15 करो. Answer is 12. Check करो. Yes, it's a 12. So value of VR1 कितना है? 8 volt. And value of VR2 कितना है? 12 volt. खत्म. So इतना ही find out करना था. हो गया. Yes. Mostly सबको आंसर आ गया. Very good. Sure. अभी मुझे क्रॉस चेक करना है कि VR1 VR2 करेक्ट है.
मुझे क्रॉस चेक करना है। सो कैसे क्रॉस चेक करेंगे? सी मैंने बताया था कि V इज इक्वल टू VR1 प्लस VR2। सो अगर मैंने क्रॉस चेक किया, देखो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, इट्स 20, मतलब ये दोनों का एडिशन करने के बाद आंसर शुड बी 20, बिकॉज गिवन वोल्टेज कितना है 20, ये दोनों का एडिशन किया तो आंसर 20 आना चाहिए। देखो 8 एंड 12, ये दोनों का एडिशन किया तो अगेन इट्स 20, देखो मैच हुआ। दैट इज जो आंसर मैंने फाइंड आउट किया, आपने फाइंड आउट किया, हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट्स टोटली करेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, so how to cross check the value of voltages by using this formula, this equation? You can cross check it. ठीक है, so anyone any doubt till this point? कुछ भी डाउट है? ठीक है, anyone in doubt? So in the chat box you can write sum number 1 is clear. Sum number 1 is clear. ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो use the chat box and mention your doubt, else you can write sum number 1 is clear. चलो immediately. So in chat box you can write sum number 1 is clear. चलो बताओ। तो सारा ने लिखा है, कृष्णा ने लिखा है, रचित, अमोल, मंदार, दिशा। So the chat box just write sum number 1 is clear. We'll see the sum again. उसके बाद we'll see the homework and then we'll go for parallel network. What is a VI in the parallel network? सीरीज देखा हमने। So यहाँ पे 2 रजिस्टर्स आने दो, 3 रजिस्टर्स आने दो, कितने में आने दो? They are connected in series. There is no control. जैसे यहाँ पे IR1, IR2 था, अगर if there are 3 resistors, then IR1, IR2, IR3, और एक resistor add होगा। Okay, concept remains same. चलो तो सबने लिखा है, very good. We'll see the answers as per the PPT. देखते मैच करते। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू थोड़ा चेंज किया पाइवोट। ठीक, तो we can solve this up. Okay, मैंने अभी जो PPT पे दिखाया, this one, you can solve this up. Okay, once you're done with the lecture, go through the video once again and ये solve करो as a homework. ठीक है, फिर से solve करो, because यहाँ पे वैल्यू 5 वोल्ट थी। Same, find the total resistance, find the total current, then VR1, VR2, then I and total, ये मैच करो सब। ठीक है, तो solve this one as a homework, homework ऐसे solve करो। okay? बाद में नोट डाउन करो, but ये this one as a homework। ठीक, चलो let's see the next one। See this one, this is also homework, I'll just tell you the hint। यहाँ पे क्या, we have 3 resistors connected in series, so no need to take tension। This one is R1, this one is R2 and this one is R3। ठीक है, so what is the total resistance? इस सब का एडिशन करो, 10 plus 5 plus 15, आंसर is 30। मैच हुआ। Once you have the total resistance, use the Ohm's law, total voltage कितना है V, so I is equal to V upon R, that means 20 divided by 30, आंसर 0.67 आएगा। okay, now I is equal to IR1, IR2 and IR3, all are same, so this should be 0.67। ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 0.67 आना चाहिए। okay, because all 3 are connected in series, तो उसका टोटल करंट भी सेम आना चाहिए एंड इंडिविजुअल करंट भी सेम आना चाहिए। I is equal to IR1, IR2, IR3, all 3 are same, that is 0.67। then we'll find the individual voltage, VR1 is equal to IR1। why I write I here? Because all 3 are same, so either you can write IR1, IR2, IR3, here you can write IR1, यहाँ पे IR2 या IR3 and do the multiplication, सबका वैल्यू सेम है 0.67, R1, R2, R3 पता है 10, 5, 50, do the multiplication, 5, 2.5, 7.5, ये तीनों वैल्यू आएंगे। Now to cross check by using this principle, यहाँ पे एक रजिस्टर एक्स्ट्रा है, तो I'll write VR3 as extra point, तो 5 plus 2.5 plus 7.5, it will become 10, I think थोड़ा कुछ मिस्टेक नहीं ना, 5, 7, 10, 10, 15 होगा। ठीक है, there is some calculation mistake, but you can cross check the answer। okay, there may be some calculation mistake यहाँ पे, there may be some calculation mistake, let me check। यहाँ पे थोड़ा calculation mistake। so what are the perfect value? I'll tell you, this one is a 0.67,
This one is a 0.67 ampere, and if I use this one, you can cross check this answer that 0.67 into 10. यहाँ पे आंसर आएगा 6.7. This answer is 6.7. The next answer is 3.35. This one is 3.35. So voltage 3.35, and the next one is 10.5, 10.05. And इन तीनों का एडिशन करने के बाद you will get answer as 20. जो मैच हो इसके साथ, ठीक है? तो this one is a homework. पहले वाला भी homework ही था, but this one is also homework. तो यहाँ पे 3 resistors connected. To find a total resistance, total current, all 3 are same. Then find the VR1, VR2, VR3. आंसर मैच करो इसके साथ, and then उसका क्रॉस चेक करो, ओके, कि आंसर 20 आना चाहिए. इन सब का एडिशन VR1, VR2 and VR3, and this value should be match. Okay, so anyone in doubt till this point? कुछ भी डाउट है? Sure, कुछ भी डाउट नहीं? पक्का? चलो, so we'll see the next one. कुछ भी डाउट होगा तो you can use ask me, okay? Then we'll see the concept of the parallel network. Same concept of VI in the parallel network. Okay, sure. Just give me one moment. We'll start the concept of parallel network. Sure. So we'll start with the parallel network. So let's see. This one is a resistor 1, and this is a resistor 2. And this all connected in parallel. See, there is a continuation, but यहाँ पे breakup line है ना. This line acts as a breakup line, and one by one manner में एक के बाद एक connection है. So they are connected in parallel. So this one is a resistor 1, and this one is a resistor 2. This one is the total voltage, and this one is the current. Okay, so V, I, R1 and R2. Now what is the next concept? The concept says, see, series में क्या था? The current is same and voltage is different. लेकिन parallel में concept क्या होगा? Totally reverse. The concept will become totally reverse, 180 degree. The current is different. Each current is different, and voltage क्या होगा? Same. इसका मतलब क्या हुआ कि I is equal to IR1 is equal to IR2. This is not correct. ये different होंगे. V is equal to VR1 is equal to VR2. This one is correct. जो सीरीज में था उसका 180 डिग्री रिवर्स, उसका अपोजिट होगा, ऐसा उल्टा हो सकता है. यहाँ पे करंट सेम था, यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट था, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा. So once you know the total voltage ना, so you know the VR1, VR2. So no need to find VR1, VR2. It's the same. And to find the current, आपको Ohm's law use करना पड़ेगा. So I, IR1 and IR2, all three are same. So for that you can use the formula. क्या? I is equal to IR1 plus IR2. You can use this formula. Okay, you can use this formula. Let's see the concept on the PPT. See this one. This is the resistor 1, this is the resistor 2 connected in parallel. This is the breakup line, or we can say one by one manner. This is the total voltage, and this one is the current. So in the parallel network, okay, the parallel network, voltage across R1 and R2 are same. The current flowing through resistor R1 and R2 are different. See this one, V is equal to VR1 is equal to VR. So जो concept series में देखा उसका totally reverse. So in the series voltage are different, लेकिन यहाँ पे voltage are same. In the series current are same, लेकिन यहाँ पे current different. I is not equal to IR1, it's not equal to IR1. And what is the final conclusion? We can design one formula. I is equal to IR1 plus IR2. This is based on KCL. KCL बात नहीं करेंगे.
This is based on the KCL. So I is equal to I1 plus I2. जैसे मैंने वोल्टेज का वहां पे किया था, this series same you can follow. I is equal to I1 plus I2 for the parallel. Okay, so this is the basic concept of VI for the parallel network. Okay, so anyone in doubt? कुछ भी doubt होगा तो लिख लेता हूँ. Anyone in doubt? So in the chat box you can write VI of parallel network is clear. That means concept is clear. We'll see the sum. एक sum देखेंगे. And उसके ऊपर I will do the two homeworks. Okay, we'll see the sum. And उसके ऊपर I will do the two homework. Please go through it. कुछ भी doubt होगा? Any single doubt? छोटा सा भी doubt होगा तो भी चलेगा. Use the chat box and give the answer. The chat box you can write VI of parallel network is clear. And parallel को sometimes they use a shortcut. Okay, this is a shortcut notation for the parallel. No need to write the whole. लेकिन आपको लिखना है as a student. But many time अगर ये दिखा ये कुठे बघितलं असं, this is known as a parallel. Okay, this is a two parallel lines. So this is a shortcut for the word parallel. So the chat box you can write this V of parallel is clear. Very good. So we have Omkar, Rachit, Krishna, Amor, Rahul, Mandar, Sarah, Disha, Ayush. Good. So anyone in doubt, push it down to the Puchu. Simple. Vaidehi also, Gaurav, Nandini, good. Others. So if you have any specific doubt, you can use the chat box, just inform. Then Meher Jha, Harshavardhan, Ashlesha. और कोई है? So depending upon your response in the chat box, you'll get the attendance. Okay, and it's a permanent. No one can erase. Not from my side, not from your side. You can't erase. Saish, Ameya, good. Chalo, let's see the next one. We'll take the sum based on this one. Okay. 5, 10, 50. Okay, chalega. So I'll design one circuit. So this is the register 1. This is the register 2. And this one is a battery. So this is the register 1 of 5 ohm. This is of 10 ohm. And this is a 50 volt. Okay. And from this, there is a current flowing. Okay. So what is the question? Find total resistance. The question is same. This is last time लिखा था. Find total resistance, total current, individual voltage and current. ये सब मुझे find out करें. ठीक है? चलो. So I'll start with the answer. First I'll get the given. So what is the given? Given is R1 is 5 ohm, R2 is 10 ohm, voltage is 15 ohm. You given, and what is to find? To find is total resistance, that is RT, total current, that is I, then VR1, VR2, IR1 and IR2. Okay? These are the points to find out. Now the circuit is parallel, it's not a series. Okay, it's a parallel circuit. And these are the given points. So first we'll find the total resistance. And total resistance का formula क्या है? 1 by RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Because यहाँ पे दो resistance. Then we'll find the total resistance. We'll find the total current, and then think about VR1, VR2, IR1, IR2. Okay, then start with this. So anyone in doubt in the given, in the question, in the to find? Sure. Okay. Sure. Let's start with the answer. So first we'll find the total resistance. See how to find total resistance? 1 upon RT, because parallel में 1 upon R1
+1/r। अब ये सबको पता होना चाहिए बिकॉज लास्ट लेक्चर में लिया था हमने. So what is R1? It's a 5. And what is R2? It's a 10. Now we can solve this one as a directly calci. Calci 1/5 find out करो, 1/10 दोनों का एडिशन करो and then take a reciprocal. अगर मैंने बेस सेम किया, this is 5, this is 10. Can we convert 5 into 10? Yes, by multiplying with 2. So ऊपर and नीचे multiply करो 2 से. So मैंने ऊपर multiply किया 2 से, नीचे multiply करो 2 से. It will become 10. Now the base is same, so we can write 2 plus 1 by 10. And that is 3/10. 3/10 किसका आंसर है? इट्स आंसर ऑफ 1/RT. ये कोना से उत्तर है 1/RT से. इट्स नॉट अ RT. तो इट्स टेक अ रेसिप्रोकल. लाइक मैंने RT को ऊपर शिफ्ट किया तो 10 भी ऊपर जाएगा एंड दिस 3 विल गो डाउन. ठीक है, दिस इज बेसिक कांसेप्ट. सो RT अगर ऊपर गया so 10 will go up and 3 will go down. So it's a 10/3. What is the final answer? It's a 3.33 ohm. ठीक है, चेक करो. So this is a 3.33 ohm. Use a calci and cross check the answer. Okay, in the chat box just give the answer. सबको 3.33 आया क्या? किसी को डिफरेंट आया आंसर? चेक करो. Anyone with the different answer or same answer? Use a calci and just give the final answer in the chat box. ऊपर थोड़ा लिखता हूँ because यहाँ पे zoom आ रहा है ना. So यहाँ पे 3.33. This is your answer. So your answer is 3.33. चलो use the chat box and give the answer. कितना है RT? So write down in the chat box RT is equal to how much? कितना है RT? सबका? Let's see किसका आंसर आ रहा है. 0.3 कैसे आ गया? सी 0.3 क्यों है क्या? बिकॉज तूने 3/10 किया ना. 3/10 इज 1/RT. किसी को 0.3 आ रहा है ना, दैट मींस इट्स 1/RT. मुझे क्या चाहिए? मुझे RT चाहिए. सो उसका रेसिप्रोकल लो. कैसे लेना है? उस आंसर को डिवाइड करो 1 से. तो मुझे 0.3 आंसर आ गया, लेकिन 0.3 किसका है? 1/RT ना. सो 1 डिवाइड बाय 0.3 करो. नाउ डू द 1/0.3. देन यू विल गेट 3.3. बिकॉज जो आंसर तूने फाइंड आउट किया, दिस आंसर बिलोंग्स टू 1/RT. ये नहीं चाहिए मुझे. आई वांट RT. So again take a reciprocal. जो आंसर है उसको again 1 से डिवाइड कर. So 1 डिवाइड बाय दैट आंसर. श्योर सबको आ गया 3.33. ठीक है, तो जो मिस्टेक अभी अमोल से हुआ दैट इज सम बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक. तो 0.3 इज नॉट द करेक्ट आंसर. ओके, इट्स अ 3.33. श्योर सबको आरटी आ गया. Then think about voltage. How to find the voltage? मुझे voltage find out करना. ठीक है, so how to find the voltage? Anyone? Any idea? Simple thing, by the Ohm's law. So let's say the Ohm's law. What is Ohm's law? V is equal to IR. लेकिन यहाँ पे R क्या होगा? RT. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? I. So what is I? We can write here by Ohm's law. So I is equal to V upon RT. What is V? V is a 15. What is RT? 3.33. चलो find the current. Current कितना है? Check करो. Find the value of current. Just with the calci and just find out the answer and give your answer. Just mention your answer in the chat box. So किसको आंसर आ गया? Answer of current I is equal to how much? Use the calci and just give the answer. Yeah, Ashavardhan answer दिया, that is 4.50. Others? Yeah, Amol को भी answer आ गया 4.5. Good. So answer is 4.50 और 4.5 एम्पियर चलेगा. तो गौरव को भी आ गया, वेदांत को भी आ गया. Others?
या आयुष का अपन है कुंदा गुड मुझे करंट भी आ गया नाउ थिंक अबाउट द VR1 VR2 IR1 IR2 उसके बारे में सोचते हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या वेरी गुड साइश साहा राहुल आदित्य रचित गुड very good so we'll think about the current and voltage okay let's see now the circuit is parallel in the parallel circuit which quantity is same voltage so no need to find VR1 and VR2 because they are same so I can write V is equal to VR1 is equal to VR2 all three are same and it's how much 15 volt तीनों का वैल्यू सेम है no need to find now मुझे फाइंड आउट करना है IR1 ठीक है now by Ohm's law अगर V is equal to IR1 है if the Ohm's law says V is equal to IRT ये this one so if I want to write VR1 so क्या आएगा V is replaced by VR1 I is replaced by IR1 and RT is replaced by R1 अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है IR1 so what is IR1 it's a VR1 divided by R1 तो मैंने ये Ohm's law को चेंज किया so this is Ohm's law only V is equal to IRT V is replaced by VR1 I is replaced by IR1 RT is replaced by R1 so what is IR1 it's a VR1 divided by R1 so what is a VR1 it's a 15 and what is a R1 it's a 5 so find out the answer okay answer find out करो same method use करो for the IR2 क्या मेथड यूज करना है VR2 is equal to IR2 into R2 so what is the value of IR2 it's a VR2 divided by R2 so it's a 15 divided by 10 ठीक है तो just give the answer in a chat box आंसर क्या आएगा IR1 and IR2 इन दोनों का आंसर क्या आएगा so use the chat box and just give the answer what is the value of IR1 and IR2 ठीक है I'm waiting So just use the chat box and just give the answer. What is the value of IR1 and IR2? इसका आंसर क्या है? Simple question. Just give the answer. So what is the value of IR1 and IR2? And इसके क्रॉस चेक भी करना है कि whether it is correct or not. By using which formula? I is equal to IR1 plus IR2. Okay. तो गौरव ने लिखा IR1 is 3, अमोल ने लिखा IR1 is 3 and second is 1.5, 3 and 1.5, same Rashid, Murshid, Ayush, Rahul, Harshvardhan, Mandar, Krishna, Vedant. Good. So IR1 is 3 ampere and IR2 is 1.5 ampere. Very good. Yes, it's correct. Perfect. उसके बाद मुझे क्रॉस चेक करना है कैसे क्रॉस चेक करना है कि whether it is correct or not. See, what is the formula of I is equal to IR1 plus IR2. I कितना था 4.5 मतलब ये दोनों का एडिशन में कितना होना चाहिए 4.5 सी 3 plus 1.5 how much it is 4.5 so total I is 4.5 दोनों का एडिशन में 4.5 that means ये मैच हुआ है perfect there is no calculation mistake it's a match answer is correct ठीक है so anyone in doubt check करो आंसर मैच हुआ है सबको yes सराहनीय भी सेम वैदेही अमिया अश्लेषा मेहर सबका सेम है वेरी गुड सो एनीवन अगर किसी को दूसरा आंसर है रॉन्ग है कुछ भी कांसेप्ट में कुछ भी डाउट है क्वेरी है पूछो या मैच हो हमने बराबर कितना इट्स 4.5 वेरी गुड सो एनी डाउट इन द गिवन क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन सिर्फ मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए इफ द कांसेप्ट इज टोटली क्लियर कुछ भी डाउट नहीं है इसमें श्योर कुछ भी डाउट नहीं का
चलो, so in the chat box just write sum number 2 is clear. क्या लिखना है? हमने सेकंड सम है ना आज लिया हमने, बाकी दो होमवर्क दिया था, but sum number 2 is clear. In the chat box just write sum number 2 is, and then we'll see what are the homeworks. इसके ऊपर जो होमवर्क है वो देखेंगे. We'll discuss some homework. So any doubt, anyone? Yes, सबने लिखा है sum number 2 is clear. उपकार, मंदार, आदित्य, अमोल, हर्षवर्धन, निशा, कृष्णा, श्लेषा, साइश, आयुष, रचित, वेदाई, उपकार, good. चलो, let's see the homework. हमने ये सम सॉल्व किया ना, एक बार क्रॉस चेक करके देखो. टोटल रेजिस्टेंस 3.3 आया था, करंट इज 4.5, ये 20 वोल्ट था, 4.5 एंड 3 एंड 1.5, ये आंसर था, मैच हुआ. ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्व किया. लेट्स सी द होमवर्क. ठीक है, यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड, सो नो नीड टू वरी. सी 5 ohm, 10 ohm, 50 ohm connected in parallel across the 20 volt supply. So find the total resistance by using this formula. So 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 15. बेस सेम करो, नहीं तो कुछ भी करो, यूज कैलसी. जो आंसर आपको आएगा दैट इज 1 by RT. लेकिन मुझे आंसर क्या फाइंड आउट करना है? मुझे आंसर RT में फाइंड आउट करना है, नॉट 1 by RT. ठीक है, सो मेक श्योर जिसको आंसर 11 by 30 आया दैट इज रॉन्ग, उसका रिवर्स ले लो 30 by 11, दैट इज अ परफेक्ट, बिकॉज़ दिस फार्मूला इज फॉर 1 by RT. एक बार 1 by RT मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल ले, then you'll get RT. Once you have the RT, use the Ohm's law. V by RT, you will get this 7.35. उसके बाद V is equal to VR1 plus VR2 plus VR3. All three are same because they are connected in parallel. So voltage सबका same रहेगा. Then find the IR1, IR2, IR3 by the Ohm's law. Voltage सबका same है. R1, R2, R3 से divide करो, you will get 4 ampere, 2 ampere, 1.3 ampere. तीनों का एडिशन करो, you will get a 7.33. तो यहाँ पे आंसर कितना 7.35 एंड आफ्टर एडिशन यू विल गेट 7.33. थोड़ा सा माइन्यूट मैथमेटिकल मिस्टेक है, मिस्टेक भी नहीं है, इट्स अप्रोक्सीमेट ओके, बिकॉज कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा माइन्यूट यहाँ से हो जाता है. सो इट्स 7.35, ये 7.33 चलेगा, इट्स ओके. बोथ आंसर का 7.3, 7.3, थोड़ा 0.02 इतना तो एरर चलता है. ठीक है, because some students will get 7.36, किसको 7.32 मिलेगा, चलो तो इट्स 7.3 समथिंग आना चाहिए, 7.3 समथिंग ये आना चाहिए. तो इतना तो माइनर डिफरेंस चलता है. ओके, बिकॉज व्हाइल कैलसी में लिखते टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. सम स्टूडेंट्स विल डायरेक्टली राइट 30 by 11, तो बच्चे 2.72 लिखेंगे, सो उसके लिए से होता है. सो आइदर 7.33 और 7.35 दोनों परफेक्ट. ठीक, तो सॉल्व दिस सम एज अ होमवर्क. Okay, I'll check the notebook once you will meet in the college. Okay, so make sure your notebook is totally ready with you. So time to time notebook complete करो, so कुछ baggage नहीं होगा. Okay, so this part is homework. Just try. इसमें कुछ doubt है क्या? Anyone? इसमें कुछ भी doubt होगा you can ask me. Sure, कुछ भी नहीं. As a final, so today जो हमने सीखा that is a VI of series and parallel network. So उसका summary देखेंगे. Distinguish table between the series and parallel, and then we'll stop. Okay, let's see the summary table. So this one is summary table. That is the distinguish between series and parallel. See, in the series network, the first point जो हमने देखना है, that is a connection of resistor. तो resistor कैसे connected होते हैं? In the continuous. Breakup line यहाँ पे नहीं होता. There is no called breakup line. They are connected in continuous. ये हमने देखा था in the last lecture, previous lecture. पैरेलल में कैसे होता है? इट्स 1 by 1 और 1 आफ्टर. सो देयर इज अ कंटीन्यूअस लाइन, यहाँ पे कंटीन्यूअस लाइन प्रेजेंट होता है. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क ऑफ रजिस्टर.
यहाँ पे रजिस्टर कनेक्टेड होते कंटिन्यूस पे, नो ब्रेकअप लाइन, यहाँ पे वन बाय वन, वन आफ्टर वन एंड कंटिन्यूस लाइन, यहाँ पे ब्रेकअप लाइन प्रेजेंट है. ओके, what is the formula of total resistance? The total resistance is, I can get RT R1 plus R2 plus R3, and यहाँ पे क्या आएगा, 1 by RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the basic formula. Voltage across each resistor, मतलब R1 R2 R3, इसके across कितना resistance है? So all resistors are, sorry, voltage कितना है इसके across each resistor के, all are different. So VR1, VR2, VR3 all are different. At the end we can write the formula VR1 plus VR2 plus VR3 also, depend upon कितने resistor, दो होंगे तो VR1 plus VR2. There are three resistors, VR1 plus VR2 plus VR3. In the parallel network, voltage are same, so I can write here V is equal to VR1 is equal to VR2 is equal to VR3. Yes. Now the concept of current in the series and parallel. This series current are same, so I can write I is equal to IR1, IR2 and IR3. All three are same. Yes, तीनों same होते हैं with the final value of total current. But in the parallel circuit they are different, so we can do the addition. So IR1 plus IR2 plus IR3. This is the basic difference between this series and parallel. So क्या concept है once again? Connection कैसा है? Continuous, no breakup line, one by one and breakup line. Total resistance addition, total resistance 1 by RT, 1 by R1. Before voltage are different and voltage are the same, and current are same and current are different. Okay, so ये chart सबको बनाना है. Like I done this one also. ये भी लिखना आपको. Okay, this is a basic summary of the today's lecture. So we can say this one is a summary of today's lecture. तो आज हमने जो कुछ भी सीखा इसका ये summary. ठीक है? So anyone any doubt? कुछ भी? Simple है. Sure, कुछ भी doubt नहीं? Just go through this difference table and in the chat box you can write difference is clear. क्या लिखना? Difference is clear. So the chat box you can write difference is clear. चलो फटाफट. कुछ भी doubt होगा? Specify that doubt. Okay. So the chat box you can write difference is clear. चलो फटाफट. ठीक है, नो डाउट. एनीवन? कुछ भी डाउट नहीं? श्योर? Sure. So we'll stop here. We'll meet on Monday. I'll not take any lecture on Sunday. Don't worry. But we'll arrange the lecture on. We'll arrange the lecture on holidays. Okay. So अगर I think Tuesday को there is, if there is a chances of holiday, I think Tuesday को अगर holiday हुआ तो I'll take one lecture. Okay. Because I'm just completing the, because this is a vast syllabus. ये syllabus बहुत बड़ा है. यहाँ पे theoretical भी, mathematical भी सब कुछ है. So we should complete our syllabus before the time. So we will get a time for the revision. Okay. So we should complete the syllabus soon. Okay. Now, if you have any doubt, you can use the chat box and just write, or in the chat box, just write your name. Okay. Just write your name and roll number, and then we'll stop. Okay. Sure. So this is the second lecture जो हमने YouTube पे लिया. उसके पहले हमने दो lecture normal Google Meet पे किया. Okay. So in the chat box, you can write your name and then stop. I think there is one doubt. Let's do. So we have to write everything and what you have taken in the YouTube lecture. Yes. So जो sequence में मैंने lecture लिया है, in that sequence you should write everything on a note, including the sum, homework, everything.
जो कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ लिखना चाहिए, यू शुड राइट ईच एंड एवरी पॉइंट। पीपीटी में जो दिया है वो तो लिखना ही है, लेकिन जो सीक्वेंस है मैंने आपको पढ़ा है, सीक्वेंस में आपको लिखना है। ठीक है, चलो और कुछ एनीवन? सो योर नोटबुक शुड बी रेडी एंड दैट इज योर परमानेंट नोटबुक। कभी भी लगा कि अरे सीरीज पैरेलल क्या होता है, रिवाइज करना है, किसी को और को पढ़ाना है, तो यू कैन टीच। तो ऐसे स्टडी करो दैट यू कैन टीच टू अनदर पर्सन, सम जूनियर्स ऑफ 10th 9th स्टैंडर्ड, यू कैन टीच टू देम। इतना सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं। वंस यू हैव द कमांड ऑन दिस कंसेप्ट ना, कुछ भी आने दो सर, you can easily solve. No need of pen and pencil also. You can just take the calcium, you can give the answer orally. Not even require the pen and pencil. You can easily just go through the circuit, you can give the answer. इतना command होना चाहिए on this circuit. Simple है. Yeah. I will take the attendance as per the your response in the chat box. तो जो कुछ मैंने क्वेश्चन पूछा था, clear है, doubt है, आंसर से, whatever it is, तो जिसने आंसर दिया, they will get attendance. बाकी सबको nothing. Okay? तो जिन्होंने आंसर दिया प्रॉपर्ली इन द चैट बॉक्स, दे विल ओनली आंसर गेट द अटेंडेंस। सो एनीवन और कुछ पूछना है? दिस लेक्चर परमानेंट, यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर एट एनी पॉइंट ऑफ नथिंग। लेट मी चेक द चैट बॉक्स once again. I think other than Amol, no one have a doubt. So we'll stop here. We'll meet on Monday. Okay? I'm again telling you, if there is an extra lecture, I'll take. Don't worry. Okay? तो extra lecture लेना पड़ेगा, because then only we can complete the syllabus before time. Because we have 6 module. Other subject में there are only 5 module. We have 6 module with the sums, everything. वैसे मैंने सब कुछ दिया है from my side. You can just check the classroom. कि मैंने सब कुछ अपलोड किया from first module to last module, everything. Okay? Sure. So we'll stop here. Thank you so much. Okay.